हाँ जी बेटा, कल असी स्टार्ट किया सी वैक्टर कैलकुलस डेरीवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ वैक्टर फंक्शंस। नाउ अज असी ये कुछ होर क्वेश्चंस करांगे। नाउ क्वेश्चन इज इफ ए लेट ए वैक्टर एंड बी वैक्टर बी द कांस्टेंट वैक्टर्स and r vector is equal to t to the power m into a vector plus t to the power n into b vector. Also r vector and d2r over dt square are parallel vector. Then prove that m plus n is equal to 1 or m is equal to n. Now r vector is given. First of all we will differentiate d2r over dt square. Now r vector is equal to t to the power m into a vector plus t to the power n into b vector. Now differentiate both sides with respect to t. Now because this is a constant vector, so इनू असी ट्रीट करांगे एज ए कॉन्स्टेंट। ओके, जिदा असी डेरीवेटिव च करते ना कि अगर कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई च पिया वेरीएबल दे नाल, दैन एज इट इज we will only differentiate t to the power m and multiply that by a vector. Now so differentiate both sides with respect to t. So this is dr over dt is equal to m into t to the power m minus 1 into a vector plus n t to the power n minus 1 into b vector. अगर तुसी इत्थे प्रोडक्ट रूल भी लगाओगे जिदा कि असी प्रीवियस वीडियो दे विच भी किया सी कि प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन का डेरीवेटिव सैकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरीवेटिव ऑफ सैकेंड करांगे तो ए वैक्टर का डेरीवेटिव की आ जाएगा 0। सो ए वैक्टर का अगर डेरीवेटिव करांगे दैट विल बी 0 वैक्टर बिकॉज ए वैक्टर इज ए कॉन्स्टेंट वैक्टर, इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट। Okay, so therefore dr over dt will become m into t to the power m minus 1 into a vector plus n into t to the power n minus 1 into b vector. Again differentiate both sides with respect to t. Again differentiate both sides with respect to t. So d2r over dt square is equal to m into m minus 1 t to the power m minus 2 into a vector plus n into n minus 1 t to the power n minus 2 into b vector. Now r vector and its double derivative are parallel vector. बेटा अगर दो वैक्टर परपेंडिकुलर होंगे ने दैन उन्होंने डॉट प्रोडक्ट 0 आती आ, अगर दो वैक्टर पैरलल ने तो उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट की होगी 0। सो हेयर इट इज गिवन दैट आर वैक्टर एंड इट्स डबल डेरिवेटिव आर पैरलल। सो देयरफॉर देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 वैक्टर। उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट की होगी 0 vector. Now we will find their cross product. Now अगर क्रॉस प्रोडक्ट की गल करिए, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ क्रॉस प्रोडक्ट की अगर गल करिए आर वैक्टर क्रॉस d2r over dt square. Now r vector is t to the power m into a vector plus t to the power n into b vector cross इट्स डबल डेरिवेटिव की गल करिए m इंटू टी टू द पावर m माइनस 1 इंटू ए वैक्टर प्लस n इंटू n माइनस 1 सॉरी m इंटू m माइनस 1 ये मैं वैल्यू dr ओवर dt की सबस्टिट्यूट कर गया। सो इतने तुहाडे कोल आएगा m इंटू m माइनस 1 t टू द पावर m माइनस 2 इंटू ए वैक्टर प्लस n इंटू n माइनस 1 t टू द पावर n माइनस 2 इंटू बी वैक्टर। देखो अगर तो आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म च हुंदा
आर वैक्टर ते डबल डेरिवेटिव। फिर तो आप डिटर्मिनेंट ना सॉल्व कर दें, जिदा कि कल भी सॉल्व किया प्रीवियस लैक्चर दे विच। अगर दो वैक्टर इन द फॉर्म ऑफ आई कैप जे कैप के कैप ने, देन वी विल यूज फाइंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट बाय डिटर्मिनेंट मेथड। लेकिन आर वैक्टर इन द फॉर्म ऑफ वैक्टर, डबल डेरिवेटिव इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ वैक्टर। नाउ अगर क्रॉस प्रोडक्ट की गल करिए, हम क्रॉस प्रोडक्ट करिए तो क्रॉस प्रोडक्ट का वैक्टर्स का होएगा। ओके, नाउ टी टू द पावर एम इंटू टी टू द पावर एम माइनस टू मल्टीप्लाई किया फस्ट ऑफ ऑल इन्हों, तो बन जाएगा टी टू द पावर टू एम माइनस टू, कोएफिशिएंट एम इंटू एम माइनस वन इंटू ए वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर, प्लस उस तो बाद असी मल्टीप्लाई करना टी टू द पावर एम इंटू ए वैक्टर नूं मल्टीप्लाई करांगे सैकेंड नाल, एन इंटू एन माइनस वन टी टू द पावर एम प्लस एन माइनस टू ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू, एम इंटू एम माइनस वन टी टू द पावर एम प्लस टू माइनस एम प्लस एन माइनस टू बी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर, प्लस एन इंटू एन माइनस वन टी टू द पावर टू एन माइनस टू बी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। नाउ ए वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सेम वैक्टर दी जीरो आएगी, सो दीज टू टर्म विल बिकम जीरो। Now we have, after taking common t to the power m plus n minus 2, we will get n into n minus 1 into a vector cross b vector plus m into m minus 1 b vector cross a vector. In the next step we will replace b vector cross a vector by negative of a cross b, because we know that a vector cross b vector always equal to negative of b vector cross a vector. So in the next step, now this will become t to the power m plus n minus 2 n into n minus 1 a vector cross b vector minus m into m minus 1 a vector cross b vector, because असी b cross a नूं रिप्लेस करता negative of a cross b नाल। Now we can take a vector cross b vector common, t to the power m plus n minus 2 n square minus n minus m square plus m. Now a vector cross b vector into t to the power m plus n minus 2, this will become, after factorizing, n minus m into n plus m minus 1 is equal to n minus m minus 1. Now from equation number 1, we will put, this is the value of r vector cross d2r over dt square. Now value substitute कर देंगे equation number 1 दे विच, we will get a vector cross b vector into t to the power m plus n minus 2 into n minus m into n plus m minus 1 is equal to 0. So therefore we have n minus m into n plus m minus 1 is equal to 0. Either n minus m is equal to 0 or n plus m minus 1 is equal to 0, means either m is equal to n or m plus n is equal to 1.
Now next question is, let r vector is equal to a vector cos into cos omega t plus b vector into sin omega t, where a vector and b vector are constant vector. Show that r vector cross dr over dt is equal to omega into a cross b, and its double derivative is equal to minus omega square into r vector. Now r vector is given, which is cos omega t into a vector plus sin omega t into b vector. Now differentiate both sides with respect to t. Again a vector and b vector are constant. Now differentiate both sides with respect to t. So dr vector over dt is equal to a vector as it is, derivative of cos omega t, that is negative of omega sin omega t, plus b vector as it is because it is constant in the multiplying. Now derivative of sin omega t, which is omega into cos omega t. So this is dr over dt. Again differentiate both sides with respect to t. We will get d2r vector over dt square, a vector as it is, so minus omega constant as it is, derivative of sin omega t, which is omega cos omega t, plus b vector as it is, omega as it is, derivative of cos omega t, which is minus omega sin omega t. Minus omega square, take minus omega square common, in the bracket a vector into cos omega t plus b vector sin omega t, which is again, it is r vector. So therefore double derivative is equal to minus omega square into r vector. Now देखो ये पार्ट तो प्रूव करता. Now we will prove that r vector cross dr over dt is equal to omega into a vector cross b vector. Now we will cross multiply r and dr over dt. Now r vector cross dr over dt, a vector cos omega t plus b vector sin omega t cross minus omega sin omega t into a vector plus omega cos omega t into b vector. Now first of all we will multiply these two terms, minus omega sin omega t cos omega t, a vector cross a vector, plus a plus omega cos square omega t, a vector cross b vector. Now multiply these two terms, minus omega sin square omega t, b vector cross a vector. Now plus omega sin omega t cos omega t into b vector cross b vector. So a vector cross a vector 0, b vector cross b vector is 0. So therefore this is equal to b omega cos square omega t into a vector cross b vector minus omega sin square omega t. Now b vector cross a vector can be replaced by negative of a vector cross b vector. So now take omega and a vector cross b vector common, cos square omega t plus
साइन स्क्वायर ओमेगा टी विच इज 1. सो देयरफॉर आर वेक्टर क्रॉस डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. Now next question is, if dA over dt is equal to r vector cross a vector and dB over dt is equal to r vector cross b vector, then show that derivative of a vector cross b vector is equal to r vector cross a vector cross b vector. Now derivative of a vector cross b vector ਅਸੀਂ प्रीवियस ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ dA over dt क्रॉस b vector plus a vector cross d vector dB over dt. Now dA over dt is given r vector cross a vector cross b vector plus a vector cross dB over dt is equal to r vector cross b vector. Now p vector cross q vector is equal to negative of q vector cross p vector. So this can be written as b vector cross r vector dot cross a vector plus a vector cross r vector cross b vector. Now we know that a vector cross b vector cross c vector which is equal to a vector dot c vector into b vector minus a vector dot b vector into c vector. Now apply this result here. So this is equal to negative of b vector dot a vector into r vector minus b vector dot r vector into a vector plus same result a vector dot b vector into r vector minus a vector dot r vector into b vector. Now this is equal to b vector cross r vector dot r vector into a vector plus b vector dot a vector into r vector plus a vector dot b vector into r vector minus a vector dot r vector into b vector. सॉरी स्टूडेंट, इतने माइनस आएगा, माइनस एज ए वैक्टर एंड बी वैक्टर. अगर डॉट प्रोडक्ट की असी गल करिए, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव मीनस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर. सो इन द नेक्स्ट स्टेप I will replace b vector dot a vector by a vector dot b vector. So these two will become same. This is negative and this is positive. So these two vector will cancel. So we will get b vector dot r vector into a vector minus a vector dot r vector into b vector. Now this can be written as r vector, again apply commutative rule, a r vector dot b vector into a vector minus a r vector dot a vector into b vector. So this can be written as, again apply this result here. Now this will become r vector cross a vector cross b vector. सो बेटा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ट्राई करो, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ नेक्स्ट स्टार्ट करांगे. ओके.